And welcome to the session on workplace communication at workplace. Right. तो आज मैं बात करने वाला हूँ द डिफरेंट communication. What are different communication technologies? What is communication at workplace? कुछ लोग अभी भी काम शुरू किया होगा, तो मैंने सोचा था कि ये कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग को सबको पता है, लेकिन जो जितना कुछ कुछ अलग टेक्निक्स, कुछ कुछ अलग टेक्नोलॉजी इस वर्क प्लेस में हम यूज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा अलग तरीके से ले लेंगे rather than talking about the theory. So the entire session today will be more of virtual learning. I will share my screen as well as when I go through the next few slides. Next slide, please. Okay, today we will learn about what is communication at workplace, verbal and non-verbal communication, different technologies for communication. तो ये तीन चीजों में मैं आज बात करूंगा. फर्स्ट वन और सेकंड वन में मैं इतना टचअप नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कम्युनिकेशन क्या कैसे होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल. तो मेरा ज्यादा फोकस इसमें रहेगा कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज फॉर कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस. सो are you all agreeing that this is what you have learned in your curriculum, that what is communication? ठीक है, ठीक है. सो आप लोग सब एग्री कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग. जो एक बात, एक आइडिया होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा, एक थॉट होगा, तो मेरे से मैं अभी मेरा जितना भी जो शेयर करना चाहूंगा कम्युनिकेशन के ऊपर, वो आप सुन रहे हैं अभी बैठ के. देन you will use it in your different workplace, or whatever different methods you will use it. So it's a take away, like you will take something from me, I will take something from you, so it's a mutual learning. So that's how communication work. ओके, तो मैं आज ज्यादा इसमें फोकस करूंगा. मैंने पहले भी बोला था कि व्हाट इज वर्क प्लेस कम्युनिकेशन. तो वो जो कम्युनिकेशन का जो बड़ा वाला जो है, मैंने अभी जो बोला, इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन और डेटा और आइडिया. बट व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, उसमें अलग अलग चीज है. तो आप लोग, यू कैन टेक अ 2 second or 3 second, and you can read what is written in that PPT. Then I can sort of So it's a process of exchanging informations and ideas, both verbal and non-verbal, between one team to a person to another team to a person, within an organization or outside. तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल उसमें डाला है कि एक सुपरमार्केट में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा. तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होगा कि to talk about the product, or to share different details about that product. तो उनका, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव वो कंपनी में काम कर रहे हैं. So the work that person has to do is sell that product. तो उसका बीच में जो कम्युनिकेशन होगा कस्टमर के साथ भी, उसका साथियों के साथ भी, the people who working along with him, that also that's actually the workplace communication. So it can be with your teammate, it can be with your मेरा एग्जाम्पल दिए जाते, तो मैं मेरा टीममेट्स के साथ बात कर रहा होगा. बाहर जाए तो मैं कोई पार्टनर से मिलेगा, कोई फंडर से मिलेगा, उनसे बात करेगा, कोई वॉलंटियर से मिलेगा, उनसे बात करेगा. तो that's part of my work. What am I doing as part of my work, and that is how the workplace communication look like. So it's an ability to communicate effectively with your supervisors or colleagues, staff, no matter whatever industry you're working in. So workplace communication is I think वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो लोग अच्छे तरीके से, और जो लोग without taking too much time, if they can talk about, share their idea and convince others. So I think communication at workplace is this is really important for all of us. All right, can we go to the next?
ओके, यस, तो मैंने पहले बोला था कि आई वोंट टच अप मच इन दिस बिकॉज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मेनी सेशंस लाइक communication, different communication and all those things. So yeah, it's both different categories divided as two: verbal and non-verbal communication. um, so an example, simple example I can give, and I can move forward because I'll take too much time in the coming slides. That video conferences and phone calls, all these things, consider as verbal communication. And now नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन, मुझे एक एग्जांपल अगर देना अभी है तो मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे चैट कर रहा हूँ, so that is also, sometimes it can be verbal as well. So so that is something, and it can be your body language, it can be your gesture, the way you react to certain things. So we consider two different categories for communication, which is verbal and non-verbal communication. Yeah, next please. Okay, so so this is actually a simple, clear process how a communication work. Basically, there'll be a sender, there'll be a common message, there'll be a channel or a platform where this message will go through, and there'll be a receiver. तो एग्जाम्पल, अगर मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ, तो सो माई वॉट एवर मैं उसमें लिख रहा हूँ, वॉट एवर द कॉन्टेंट, ओके, मेरा एक इवेंट है, मेरा इवेंट के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तो मेरा मैसेज होगा मेरा इवेंट के बारे में, और उस इवेंट में क्या क्या होगा, कब होगा, टाइमिंग कैसे होगा, वो सब होगा, दैट विल बी द मैसेज. सो आई एम द सेंडर and the channel will be email. So and it can be anything also. Right now I'm just taking an example of email, or it can be phone calls, it can be Google Hangout, it can be Google Meet, whatever it is. And there will be a receiver who will be receiving that email from me. So I'm just taking example of mine only. तो मेरा email उनको receive होगा, तो मेरा event के बारे में पता चलेगा. Then they will grasp that information, whatever I meant to say, or when meant to make them understand. So it's a simple process, and it's a cyclic one. Then the receiver will have some other questions. होगा कि ठीक है, इवेंट में और कौन कौन आ रहे हैं, तो इट, आई मीन, इट कैन go through, it can be a cyclic thing. So there will be a sender, there will be a message, a proper content, and there will be a channel, and there will be a receiver. Yeah, can we go to the next please? Okay, so from here I will take little time for each slide, because I will show you live that how different technologies which we all use in. So first, technology which I am talking about is the email. तो सब लोग ईमेल के बारे में जानता होगा. आजकल ईमेल के बिना सब सब कुछ ईमेल में आ गया, सब, इवन इफ इट्स इनफॉर्मल और फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, we all are used to. So this is an email inbox, this is mine, and I will just tell you about few things which is most important, and most of you might know, but I'll just cover up, and we'll see how it goes. Okay, so let's see how to compose an email. Okay, so you all can see this, right? Okay, ठीक है. So this is a I'm just composing one email, which so I'll just tell you which I need to send it to my somebody, like, okay, so there'll be a, okay, my manager, I'm sending one email. Okay, okay, and there is these two options here which you can see, CC and BCC, right? तो कुछ लोगों को पता है कि इसका क्या काम है, मतलब somebody knows ये किस लिए यूज करते हैं, सीसी क्या है. सो सीसी इज द पर्सन, तो मैं मेरा मैनेजर को एक ईमेल लिख रहा हूँ, और उसमें मेरा एक दूसरा कोलीग का साथ में काम कर रहा होगा. अगर शायद अभी माहला भी मेरा साथ काम कर रहा होगा, तो मुझे माहला को उस ईमेल के बारे में बताना है. तो मैं सेंड कर रहा हूँ मेरा मैनेजर को, लेकिन उस ईमेल के बारे में मुझे माहला को बताना है, तो मैं माहला को सीसी में रख देंगे.
ठीक है. And what is so see the same mail, correct? Okay, now I'll just come to the BCC, and this is something which I don't, you know, tell you to use it. It's not a professional way to do BCC. BCC is something, when if there are so many people in the loop, and certain people needs to be informed, and certain people needs to doesn't know about this. But when you put somebody in BCC, um, तो इसलिए क्या होगा, इस मेल जाएगा जो भी मैं लिख रहा हूं इधर, लेकिन इस मेल नम्रता को जाएगा, सीसी में महाला होगा, जो व्यक्ति को मैंने बीसीसी में रखा हुआ है वो व्यक्ति को मेल जाएगा, लेकिन जो लोग मेल थ्रेड में ऑलरेडी है, विच इज नम्रता एंड महाला, उनको पता नहीं चलेगा ये दिस पर्सन इज देयर इन दैट मेल एज वेल. So that's not a professional way to do it. But we always, whoever you want to, keep, you want to inform whatever the conversation you are already having, please use CCC only. BCC is something, people won't know, and what the conversation, and that person will get the mail, but the people who are in the main thread won't understand, or who all are there in BCC. So that's something which I will. And another thing which important is always to have a subject. So आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ईमेल आता है हमारे इनबॉक्स में, तो हमें कुछ कुछ पढ़ने का ऐसे जल्दी पड़ेगा, कुछ हम अनरेड करके रखेगा, कुछ हम पढ़ेगा भी नहीं बिल्कुल. तो to have a subject line is very important. So that should be actually talking about what are you actually talking in the content, what is in the body text. So basically तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, दैट इज मेरा एक इवेंट है, उस इवेंट के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तो यू शुड type it in a way that invitation to this particular event, and date. I mean, if you have the date and time, then it's good to put invitation for the event. And you can also write that it's very important. ओके, सो आप लोग इस सब्जेक्ट को देख लिया, तो अगर इस ईमेल मेरे पास आते तो मुझे पता होगा कि इस मेल कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स ऑल्सो सेज दैट इट्स एन इन्विटेशन फॉर एन इवेंट. बट ये भी जरूर ध्यान में रखना, डोंट पुट एवरीथिंग एज इम्पोर्टेंट, if it's not important. But to have a good subject line will help who are the receiver to respond to you back in as soon as possible when they see that email. And then you type whatever the text you want to type, then you will send that email, right? Okay, now I will show you, so you can see something called my name and my designation, my mobile number and everything. So this is called the email signature. ठीक है, तो basically to have an email signature, it will really help that other person who is the receiver side to understand who are you and your designation and where the company you're working. And if you want to give your mobile number, or whatever the landline you have, it's good to give that as well. And if you have a company website link or something, that's something which I have done in my signature. So when I send an email to an external person जिन्हें मुझे बिल्कुल पता भी नहीं है, तो उनको इस ईमेल से बाद वो लास्ट में सिग्नेचर मेरा मिलेगा, तो उनको पता चलेगा कौन सा कंपनी में काम कर रहा हूँ. तो और भी कुछ फ्यूचर में कुछ कॉन्वर्सेशन होगा मुझसे बात करने के लिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा, मेरा कंपनी का वेबसाइट लिंक भी रहेगा, तो इट विल बी इजी फॉर द अदर पर्सन हु इज रिसीविंग दैट मेल टू get back to you if they have any other. So there is this option, you all know that attach file, and there is this option here to insert certain links. If you have some links, you can insert that.
this setting side here, then go to the settings, and in general में नीचे जाके आपको सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो या दिस इज वेयर आप लोगों को आपका सिग्नेचर डाल सकते हो, आपका नाम, आपका अगर पोजीशन डिजिग्नेशन वगैरह डालना है, आपका मोबाइल नंबर लिंक वगैरह डालना है, तो इसमें डाल के आप लोग नीचे जाके इसको सेव कर सकते हैं, ताकि दैट विल अपीयर इन योर whenever you compose an email, तो वो तुरंत आपका ईमेल सिग्नेचर जैसे बन जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? Is it clear? So you'll have to go to the settings, go to the general thing and go down, then you will see the signature column there. Add your name, whatever information you want to give, and whatever font, कोई भी font आपको डालना है आपका थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, वो सब डाल के आप सेव कर लीजिए, then it will come in your signature. Yeah, cool. So that's अगर ईमेल के बारे में बोलना शुरू किया तो there are so many things, but I think this is a common main thing. Anything else? कुछ और सवाल है ईमेल के ऊपर? Then I can go ahead. I think we are also running out of time. Cool. Okay, let's move to the next one, please. तो हैंग आउट आप लोगों को ईमेल में भी देख सकते हैं, द लेफ्ट एंड बॉटम साइड, वेयर बेसिकली आप लोग जीमेल यूज कर रहे हो, तो आप लोगों का कोलिग्स के साथ अगर चैट करना है और वीडियो कॉल पे बात करना है, ऑल दोस थिंग्स, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड द हैंग आउट। सो तो आप लोग इसमें न्यू कॉन्वर्सेशन करके आपका कोई भी कॉलीग और फ्रेंड से बात करना है, तो उनका नाम डाल के देन यू कैन, आप लोगों को इधर वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं, सो दैट इट्स अ इजी प्रोसेस। तो कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा अर्जेंट काम है उनको, थोड़ा if it's not that important and if you want to make that done like so quickly, you can use yes, Mala just ping me. So yeah, so it's a thoda acha tool hai. So this all you will get it in as part of your Google account. So this is something which all the people in the workplace they do, for a faster conversation. So that's how it's so simple. It's वीडियो कॉल होगा, नॉर्मल ऑडियो कॉल होगा, उस मैसेज होगा। गूगल ड्राइव इसलिए हम यूज करते हैं कि टू स्टोर आवर डेटा। So this is also is there as part of your email account. So when you, even if you are using the email, there is this dot on the right top end. When you click on that, you can see email, drive, meet, all these things. So you will have to click on the drive, then you will get like this. So तो मेन मैंने बोला था कि टू स्टोर द डेटा और शेयर डेटा विद सो मेनी पीपल, and this is something, so there is something which is called the my drive, where you can, so this will be your own drive only, so nobody can see this drive. When you want to share some some sheets or some drive with other people, you'll have to create that new, and even if it's a folder or a doc or something, you'll have to create that and share it with other people who you want to see that. So that's the, what is the difference between different of Gmail and email. I used to send is, say, I use the Google account that's called the Gmail, and there is separate things called yahoo.com. You must have heard about that, rediffmail.com, and but nowadays it's all common that we all started using Gmail as the platform where it's all coming together, as you can send emails, you can have
your drive together. You can have your Google Calendar together. Everything is at one place where you can send the email as well. So different people use different platforms, like as I said, Yahoo.com, Rediffmail.com, all these things. But this is another thing which is common right now, and which most all of us are using right now. Can we go to the next one? I will talk about the Google Doc, which is also as part of a product from Google, which again you will get it from your email ID. I mean, from that platform itself, where you can see docs. So, what is the purpose of this? Yeah, this is how you will get a Google Doc, where basically to earlier we used to, I mean, not earlier, right now also we using all our documents and Excel sheet and everything. So now it has become online, where so many people can work on the same time. So that's the best part about all these documents, which all are in online. It's called the Google Docs, which you can also get it from your email inbox. That's a box there, where if you're working on in anything, कुछ भी हो सकता है. तो अगर आप एक नोट बना रहे हैं, what is, say example, what is communication, आप शेयर मतलब एक डॉक्यूमेंट बना के आपको आपका कोलीग के साथ काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा. तो आप जितना भी टेक्स्ट इसमें लिखोगे, इट ऑल विल बी ऑनलाइन, and there is this option here which is called the share on the right top hand. When you click on that, obviously you'll have to add a title for the document. And when you click on that, there is this option where आप जिस लोगों के साथ ये शेयर करना चाहते हो, आपको उनका ईमेल आईडी डालने से आपको वो लोग भी इस शीट में आ जाएगा. तो अगेन इफ मुझे एक शीट महाला के साथ शेयर करना है, तो मैं महाला का ईमेल आईडी टाइप करूंगा. देन मैं वो ईमेल आईडी टाइप करने के बाद अगर कुछ मैसेज लिखना है तो मैसेज लिख के देन आई विल जस्ट सेंड इट टू Mahala, and so that he can get that sheet as well. तो इसमें one of the important thing is that आप दोनों इसमें साथ में काम कर सकते हो, जितना भी लोग हो. एक डॉक्यूमेंट, अगर एक ग्रुप डिस्कशन होके एक डॉक्यूमेंट साथ में बना रहे, तो अगर एक कमेंट, ऑनलाइन कमेंट चाहिए, तो मुझे ये टैग करके कमेंट में जाके आई कैन टैग Mahala, से Mahala. I can also say that he's also there in the sheet. I can say that please edit this. एंड वो महाला को असाइन हो जाएगा, तो महाला को ऑनलाइन में मिल जाएगा. तो वो दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन कम मेक अ डॉक्यूमेंट टुगेदर, एंड इट विल बी ऑल सेव्ड इन योर ड्राइव. तो मैंने आप लोगों को ड्राइव बताया था, जितना भी ये आप शीट में कर रहे हो, सारे कुछ कर रहे हो, वो ड्राइव में आपका सेव हो जाएगा. एंड पीपल इवन महाला सी ही आल्सो कमेंटेड. So all comments, so it will be a place where all of us come together and make a document, and it will be a proper, and it all will be saved in your drive. The next one is the Google Sheet. I am just it's again a product of Google, which is called the Google Sheets, where आप लोग सुना होगा एक्सेल के बारे में. तो ये ऑनलाइन एक्सेल है. तो इसमें भी it's, I mean, all the things are same like Google Doc only. You can comment, you can add people, you can share, all those things can be done. This is something which again, if there are so many people together wants to make a, say अगर आप लोगों को कुछ टाइमलाइन बनाना है और कुछ डेटा इसमें करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है. अगर एक छोटा एग्जाम्पल है, तो अगर फिनेंस वाला टीम हर कंपनी में होगा, सो फिनेंस वाला टीम
को ये गूगल शीट्स बहुत हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि उनका टीम में बहुत सारे लोग होगा, तो सब लोग एक साथ आके इकट्ठा आके कुछ कैलकुलेशन करने, कुछ पेरोल बनाना, ये सब इसमें हो जाएगा. So it's a similar feature like Google Doc only, where here you can add do your equations, calculation, addition, deletion, all those things, and you can also share with others. Okay, next thing please. ये इसमें लास्ट होगा कि गूगल स्लाइड, अगेन गूगल प्रोडक्ट. हम लोग पहले मेरा बचपन में मेरा याद है कि स्कूल के लिए कुछ प्रेजेंटेशन होता तो हम ऑफलाइन में करते थे. अगेन ये सारा कुछ ऑनलाइन में आ गया, तो आप लोग को जितना भी प्रेजेंटेशन, मेरा अभी प्रेजेंटेशन आप लोग दिख रहा है, ये मैंने गूगल स्लाइड में किया है. अगेन यू कैन ऐड स्लाइड एवरीथिंग. तो जितना भी स्लाइड ऐड करना है, उसको क्या नाम रखना है, कौन सा कलर देना है, कोई भी कुछ वीडियो डालना है, ये सब ऑप्शन इसमें है. ये भी सेम गूगल शीट, गूगल डॉक के सेम बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हो, बाकी लोग भी साथ में काम कर सकते हो. एंड यू कैन, तो मैं अभी एक गूगल शीट का प्रिपेयर किया था, ये वाला सेम आपको दिखा रहा है अभी. तो everything you can do, so it's all online. It's so easy. So this is your email inbox, and it's a common thing where you can access anything, whether your Drive account, whether your Google Doc will be here, your sheet will be here, your slide will be there, and your calendar will be here. And if you're doing a online meeting, your Google Meet will be here. So all of these things are right here in your if you have a Gmail email ID, where you can see all the Google apps here. So these all are the different apps where you can find it from here. Okay, I will show you the next thing in the bucket is the Google Calendar. So I think this is something very important for all of us, including even from the people who are from the Quest, or आप लोग जहाँ पे भी काम करेगा, आजकल सब लोग का टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो गया. तो इवन ऑफिस टाइम का भी बीच में कुछ लोग का आपस का टाइम मिलना है, तो आप लोग ब्लॉक करना पड़ेगा. तो आजकल सब लोग गूगल कैलेंडर में जाके सबका टाइम वर्किंग स्केड्यूल बना देता है. तो ये इसलिए हेल्पफुल है कि अगर कोई दूसरा आपके साथ एक मीटिंग करने का प्लान कर रहे हो और आपका कैलेंडर फ्री दिख गया, तो वो आदमी को आपका उस वाला टाइम स्लॉट में जाके एक बना के आपके साथ मीटिंग कर सकते हो. तो यू कैन see the Google calendar here. Okay, so this is my calendar. So I will just explain you little bit. Okay, so you can see the month here. You can see different people who I have tagged, because I am really working closely with these people. तो मुझे जिन लोगों को कैलेंडर देखना है, जिनमें मुझे पता चलेगा कि इस व्यक्ति इस टाइम में फ्री है कि नहीं, तो इसलिए मुझे उस आई हैव टू उस व्यक्ति का कैलेंडर मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ओके, सो उस व्यक्ति का अगर सब्सक्राइब किया तो वो आपका कैलेंडर में दिख जाएगा कि ठीक है. अगर मुझे, ठीक है, आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल फॉर टुमारो. तो कि मुझे एक किसी के साथ मीटिंग करना है, तो मैं कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कल मेरा कैलेंडर है, ये मेरा कैलेंडर है. कल मुझे फिलहाल तो अभी 2 ही मीटिंग है. तो मेरे को अभी 12 बजे एक मीटिंग करना है, मान ले आकाश के साथ, ठीक है. तो मैं इसमें करूंगा कि तो वो मुझे इसलिए पता चला कि 12 बजे आकाश का भी टाइम फ्री था. तो मैं जाके इसमें लिखूंगा कि कैचअप.
तो दिस इज हाउ यू सेंड अ कैलेंडर इनवाइट. आप लोग सुना होगा कैलेंडर इनवाइट कैसे सेंड करना है. ठीक है, तो कैलेंडर इनवाइट से सेंड करने से उस दूसरा टीम मेंबर को आपका इनविटेशन मिल जाएगा, सो दैट वो अगर अवेलेबल है, अगर अगर दूसरा टाइम देना चाहते हैं तो सब कुछ ऑप्शन उसमें है. तो मैं कल का 12 बजे का स्लॉट इसमें कर दिया, मैंने लिख दिया कैचअप. और मुझे इसमें राइट साइड में जाके मुझे ऐड करना है किसके साथ मीटिंग करना है. तो कोई भी आपका कोलीग होगा, तो मैंने डाल दिया, टाइमिंग डाल दिया, मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, किसके ऊपर मीटिंग करना है, किसको डालना है, वो आदमी को मैंने डाल दिया, और किस प्लेटफॉर्म में मीट करना है. आजकल हम सब लोग घर पे लॉकडाउन है, किसी को मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, सब कुछ अभी भी ये वर्चुअली हो रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स विच वी यूज इज गूगल मीट. मैंने आपको दिखाया था, वो भी गूगल का एक प्रोडक्ट है. आपको उस राइट हैंड साइड में गूगल का वो मिल जाएगा एप्स. It's a online similar like hangout only, where you can meet and have your meetings. फिर जाके आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है, तो लिख सकते हो, डियर आकाश, मुझे इस टाइम में मिलना है, दिस इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग, यू विल राइट दैट डिस्क्रिप्शन. तो उस टाइम में आप जब सेंड करने का टाइम में उस कैलेंडर इनवाइट के साथ वो इनविटेशन सॉरी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, सो दैट कुछ लोग अगर देखने के टाइम में इजी हो जाएगा कि हाँ ठीक है, इस मीटिंग इस टाइम में इसकी बारे में है, तो दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट or decline the calendar invite. या सो आप लोगों को सबका कैलेंडर देख के ब्लॉक करना जरूरी है. और आप सबका देख के किसी का टाइम मांगने तो फ्री है तो देन यू कैन ब्लॉक द कैलेंडर लाइक दिस. एंड when you accept a calendar it will show like this. सो कल मेरा एक मीटिंग है, फ्राइडे है कल, मई 15, 3:30 से 4 बजे तक एक. तो इसमें लिखा हुआ है कि डिस्कशन करना है, तो इसमें सारे लोग एक्सेप्ट कर लिया, और इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया था कि इस ब्लॉकिंग टाइम फॉर डिस्कसिंग दिस. तो इस ए वाला सेम चीज आपको सबके कैलेंडर में दिखेगा जो भी उनमें है. तो मेरा कैलेंडर में दिख रहा है, इसमें एक अभिजीत करके उनका भी है, तो वो भी मीटिंग में पार्ट है, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया, तो उनका कैलेंडर में दिख लिया. अगर कोई आदमी आके दूसरा सेम टाइम में कुछ शेड्यूल करना है तो वो उनको नहीं कर सकते, उनको ऑलरेडी दिखाई देगा अभिजीत इज ऑलरेडी इन अ मीटिंग और बोबन इज ऑलरेडी इन अ मीटिंग. या दैट्स हाउ यू डू गूगल कैलेंडर एज वेल. आप लोगों को हेल्प करेगा, जिसमें आप लोग वर्क प्लेस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो. जस्ट एवरी टाइम जस्ट बी एन एक्टिव लिसनर. कोई भी मीटिंग होगा तो आप एक्टिव रहने के बाद ही आपको कुछ सवाल है, कुछ सजेशन है, कुछ कमेंट है, तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो. और प्लीज प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन. अगर मीटिंग में आके और कम्युनिकेशन का टाइम में भी आप आधा इंफॉर्मेशन बोल दिया, तो जो भी आप लोगों का साथी है वो मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा. तो बी क्लियर विथ योर कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन. तो आप लोगों को दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर सकता है. तो मैंने आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिया, ईमेल और फोन कॉल और जेस्टर्स, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग यू कैन यूज. It's all part of communication. And yeah, I mean, the next point is like when you look at somebody's eyes and when you talk, when you get that confidence, right? आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि okay, I am just having, so मेरे साथ होता है, if I am talking to somebody, just looking their eyes and मुझे अगर थोड़ा डर भी होता तो, but still I will be able to sort of tell मुझे क्या बोलना है. So that really helps me. That's a small tip for all of you as well. But the next point is not possible right now. I suggest all of you sit at home, but whenever it's possible, it's good to do a face-to-face interaction. That's much helpful and interactive, at least for me. Develop trust with your coworkers, maintain communication with all team members, show respect to everyone who's present at the meeting, ask relevant questions,
कुछ कुछ मीटिंग में आप लोग ऐसे चुप बैठो बैठे तो आपको कुछ सवाल है तो भी बाद में पूछना है, कुछ लोग भूल जाएगा, तो मीटिंग का बीच में कुछ कुछ रेलेवेंट सवाल है आप पूछना चाहिए, ताकि यू विल बी क्लियर बाय द एंड ऑफ द मीटिंग। एंड फीडबैक भी देना चाहिए कि मतलब कैसे रहेगा मीटिंग, और इफ सम सजेशन यू हैव, देन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फीडबैक एज वेल। दिस ये थोड़ा टिप्स है आपके लिए, आई थिंक इट विल हेल्प यू ऑल ऑफ। All right, I'll just pause for 1 minute or so, then for questions. If you have any questions as well, please post it in the comment box right now, or later. I will be able to sort of answer you later, or I can take it offline. Whatever way, email. I can also use thoda different communication techniques. Whether I can email you or something, whatever ways I can help you. But is there any questions as of now? As a sudden question, कुछ सवाल है अभी बहुत जरूरी पूछने का, और आप लोगों को लगता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, देन आई कैन गेट बैक टू यू। ओके, एनी क्वेश्चंस? कुछ भी सवाल हो, मतलब इट्स अ बेसिक थिंग आल्सो, लाइक आई वोंट टेक मच टाइम। मैं अभी खत्म करूंगा, लेकिन मैं ऑफलाइन लेके आप लोगों को आंसर देंगे। ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक आई विल टेक द क्वेश्चंस ऑफलाइन। ऑलराइट, just take, like just 20 seconds or something, and just टाइप। आप लोग है ना 20 सेकंड लेके आप लोग थोड़ा टाइप कर सकते हो कि चैट बॉक्स में आपको कुछ नया आइडिया मिल गया, नया कॉन्सेप्ट के बारे में आज पता चला, और ऐसे कुछ समथिंग आप कुछ नया सीखा आज, तो आप डाल सकते हो चैट बॉक्स में। Yeah, it's tell me about more about the language, and it's how I am. How question? Please answer, sir. Okay. How language and it's important for good communication. So, आप लोगों को पता है, like communication is that's one of the main thing that everyone look forward, like if you, I won't say to have a proper understanding about a language or something, कोई भी language में आप लोग comfortable है, and if you are confident enough to talk, or present something to other people, I think even if it's English में आपका ज्यादा अच्छा है, और हिंदी में आप अच्छा है, और whatever language, if you are good enough, I think language is, I would say personally, for my this thing, I would say language थोड़ा secondary आएगा मेरे बारे में, क्योंकि मुझे मेरा मदर टंग अलग है। मैं अभी हिंदी थोड़ा बहुत सीख लिया, वो थोड़ा बहुत है मेरा हिंदी। I know little English, so wherever I'm comfortable, and wherever you are comfortable to use that particular language to express your feeling and share your ideas, I think that really matters, rather than having good communication skill. I mean, you need to have communication skills, and I always suggest that improve your I mean, it's good to have go for a spoken English class or something, so that we all are living in this country where I think it's all coming like English is much necessary. So it's also necessary to have a good communication skill in English, as well as in your mother tongue, whatever language you are comfortable in. Yeah. Okay. Anything कुछ नया सीखा? Any other comments you want to just say? Then if you can just put it in the chat box. Otherwise, I'm good to go. Can we go to the next slide? या आप लोगों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, भारत स्किल्स पोर्टल के बारे में, एंड ये यूज कर लीजिए। आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा, डाउनलोड किया होगा। इसके साथ साथ क्वेस्ट ऐप भी आपके साथ आपके पास होगा ऑलरेडी। इसमें ऑलरेडी बहुत सारा नया कंटेंट भी अभी आना शुरू हो गया।
आपका assessment, self assessment कर सकते हो. So feel free to download these two apps. And any questions, reach out to all your people who are there, Mala, Kirti, or whoever it is, and feel free to reach out to me as well. As yeah, thank you so much, everyone, for your. I'm just took like 2-3 minutes more, but thanks a lot. It was a lovely conversation. I'm hoping to have or hoping to meet all of you when all these things are fine. Maybe wherever you are, आप लोगों के साथ आके एक दिन spend करने का plan है. Thank you so much, and all the best, all the very best for your future. Yeah, thank you. Bye.